What is the importance of chromosomes replication during interphase? Answer. Interphase is a stage between the successive cell divisions. It is considered as the resting stage of nucleus as it does not show any morphological changes. But physiologically it is a very active stage in the life of a cell as the cell prepares itself for division, and many biochemical changes occur during this stage. इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम की नकल की क्या अहमियत है? जवाब: इंटरफेस लगातार सेल डिवीजनों के दरमियान न्यूक्लियस के आराम का एक मरहला समझा जाता है, क्योंकि ये कोई शक्ल तब्दील नहीं करता है, लेकिन जिस्मानी तौर पर ये सेल की ज़िंदगी में बहुत फ़ाल मरहला है, क्योंकि सेल खुद को तकसीम के लिए तैयार करता है और बहुत सी बायोकेमिकल तब्दीलियां इस मरहले के दौरान होती हैं। Why is meiosis called reductional division and mitosis called equational division? Answer. In meiosis, the number of chromosomes is reduced to half so. It is called reductional division. The gametes are formed in sexually reproducing organisms in germ cell. While in mitosis, number of chromosomes remains constant after division, hence, it is called equational division. मायोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा जाता है और मिटोसिस को इक्विवेलेंट डिवीजन क्यों कहा जाता है? जवाब: मायोसिस में क्रोमोसोम की तादाद कम होकर निस्फ रह जाती है, इसलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। गीमेट्स जरासीम के खलियों में जिनसी तौर पर दोबारा पैदा करने वाले जानदारों में बनते हैं। मिटोसिस में क्रोमोसोम की तादाद तकसीम के बाद मुस्तकिल रहती है, इसलिए इसे इक्विवेलेंट डिवीजन कहते हैं। Write 3 processes which take place in interphase. Answer. 3 processes in interphase. First, replication of DNA with the synthesis of histones and nuclear proteins. Second, division of centriole to new centriole which lie at right to each other. Third, the synthesis of energy, rich compound to provide energy for mitosis. 3 अमल लिखीं जो इंटरफेस में वाक़े होते हैं। जवाब: इंटरफेस में 3 अमल। पहला, हिस्टोन और न्यूक्लियर प्रोटीन की तरकीब के साथ डीएनए की रेप्लिकेशन। दूसरा, सिंट्रेविल की नए सिंट्रेविल में तकसीम जो एक दूसरे के दाएं जानिब वाक़े होते हैं। तीसरा, माइटोसिस के लिए तवानाई फराहम करने के लिए तवानाई से भरपूर मुरक्कबात की तरकीब। Explain the significance of mitosis. Answer. First, the number of chromosomes in this cell division remains constant in daughter cells. Second, asexual reproduction occurs with the help of mitosis. Third, size of cell is controlled by mitosis. Fourth, growth and development of the zygote is maintained through mitosis. मिटोसिस की अहमियत बयान करें। जवाब: पहला, डॉटर सेल में इस तकसीम में क्रोमोसोम की तादाद मुस्तकिल रहती है। दूसरा, इस तकसीम की मदद से गैर जिनसी तौलीद होता है। तीसरे, सेल का साइज माइटोसिस के जरिए कंट्रोल किया जाता है। चौथा, ज़ाइगोट की नशोनुमा माइटोसिस के जरिए बरकरार रहती है। Differentiate between chromatin and chromatid. Answer. Chromatin, diffuse, deep staining hereditary material, metabolically inert. Chromatid, longitudinally split half of a chromosome, light staining hereditary material, metabolically active. In short, chromatin is the material that makes up chromosomes, while chromatids are the duplicated halves of chromosomes that are joined together by a centromere. क्रोमेटिन और क्रोमेटिड के दरमियान फ़र्क करें। जवाब: क्रोमेटिन फैला हुआ, गहरा दागी मौरूसी मवाद, मेटाबॉलिक तौर पर गैर फ़ाल। क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम का निस्फ हिस्सा,
हल्के दागी मौरूसी मवाद मेटाबॉलिक तौर पर फाल मुख्तसरन क्रोमेटिन वो मवाद है जो क्रोमोसोम बनाता है जबकि क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम के डुप्लिकेट आधे हिस्से होते हैं जो एक सेंट्रोमीर के जरिए आपस में जुड़े होते हैं. Distinguish cytokinesis from karyokinesis. Answer. Cytokinesis. A. It is the division of the cytoplasm of the cell. B. It occurs at the end of M phase, after the nuclear division is over. Karyokinesis. A. is the division of the nucleus of the cell. B. It occurs during M phase before the cytokinesis. कैनिसीस और क्रियोकेनेसिस में फ़र्क बताएं. जवाब. साइटोकिनेसिस गलिफ ये सेल के साइटोप्लाज्म की तकसीम है. बे ये न्यूक्लियर तकसीम ख़त्म होने के बाद एम फेज़ के इख्तिताम पर होता है. क्रियोकेनेसिस गलिफ ये खले के न्यूक्लियस की तकसीम है. बे ये साइटोकिनेसिस से पहले एम फेज़ के दौरान होता है. Define crossing over. Answer. Crossing over is the exchange of corresponding parts between non-sister chromatids of homologous chromosomes producing anew combinations during gamete formation. It occurs during the prophase one of the first meiotic division. क्रॉसिंग ओवर की तारीफ करें. जवाब. क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान मुताल्लिका हिस्सों का तबादला है जो गेमेट की तश्कील के दौरान एक नया इम्तिजाज पैदा करता है. ये पहले मायोटिक डिवीजन के परफेज 1 के दौरान होता है. What is budding? Answer. Budding is the type of asexual reproduction in which an outgrowth is formed which is ultimately separated and grows in size, for example. Yeast, fungi? बडिंग क्या है? जवाब. बडिंग गैर जिनसी तौलीद की वो किस्म है जिसमें एक बड बनता है जो बिलाखिर अलग हो जाता है और साइज में बढ़ता है जैसे खमीर, फंगस. Define disjunction. Answer. Disjunction is the normal separation or moving apart of chromosomes toward opposite poles of the cell during cell division. डिसजंक्शन की तारीफ करें. जवाब. खले की तकसीम के दौरान खले के मुखालिफ पोल्स की तरफ क्रोमोसोम का मामूल से अलग होना डिसजंक्शन कहलाता है. Define chiasmata. Answer. Chiasmata is the point at which two homologous non-sister chromatids exchange genetic material. कियाज़माटा की तारीफ करें. जवाब. कियाज़माटा वो नुक्ता है जिस पर एक ही जिन्स के दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जीनियाती मवाद का तबादला करते हैं. Define regeneration. Answer. Regeneration is the process of replacing or restoring damaged or missing cells, tissues, organs, and even entire body parts to full function. All living organisms, including plants and animals, have some ability to regenerate as part of their natural maintenance of tissues and organs. रीजेनरेशन की तारीफ करें. जवाब. रीजेनरेशन का अमल तबाहशुदा गायब शुदा खलियात, टिश्यूज़, आज़ा और यहाँ तक कि जिस्म के तमाम हिस्सों को मुकम्मल काम के लिए तब्दील करने या बहाल करने का अमल है. तमाम जानदार बशमूल पौधों और जानवरों में अपने टिश्यूज़ और आज़ा की कुदरती देखभाल के तौर पर दोबारा तख्लीक करने की कुछ सलाहियत रखते हैं. What is main function during G2 phase of cell cycle? Answer. The main function of this phase is that cell prepares proteins for the production of spindles fibers. सेल साइकिल के G2 मरहले के दौरान अहम काम क्या है? जवाब. इस मरहले का बुनियादी काम यह है कि सेल स्पिंडल फाइबर्स की पैदावार के लिए प्रोटीन तैयार करता है. Which phase is the longest in the cell cycle? Answer. Interphase is the longest phase of the cell cycle and is considered the growth phase of the cell cycle in preparation for cell division. सेल साइकिल में कौन सा मरहला सबसे तवील है? जवाब.
इंटरफेस सेल साइकिल का सबसे लंबा मरहला है और इसे सेल डिवीजन की तैयारी में सेल साइकिल का तरक्की का मरहला समझा जाता है। What is the role of centrioles apart from spindle formation? Answer. Besides the spindle fiber formations seen in animal cell division, they form the basal body of cilia and flagella of animal plant cells. स्पिंडल की तश्कील के अलावा सिंट्रेवल्स का क्या किरदार है? जवाब: जानवरों के खलियों की तकसीम में नज़र आने वाले स्पिंडल फाइबर की तश्कील के अलावा वो जानवरों और पौधे के खलियों के सीलिया और फ्लाजेला का बुनियादी जिस्म बनाते हैं। What happens to the DNA of the plastids and mitochondria during nuclear division, such as mitosis? Answer. Only nuclear DNA takes part in mitosis. The extra chromosomal DNA found in mitochondria and plastids are unaffected by nuclear DNA division in the nucleus. न्यूक्लियर डिवीजन जैसे माइटोसिस के दौरान प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का क्या होता है? जवाब: सिर्फ न्यूक्लियर डीएनए माइटोसिस में हिस्सा लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए न्यूक्लियस में न्यूक्लियर डीएनए की डिवीजन से मुतासिर नहीं होता है। Cells that rarely divide, if at all, will spend most of their time in what phase of the cell cycle? Answer. When the cell is not preparing to divide anytime soon, it will spend its time in the GO phase. This phase is distinct from the actual cell cycle and can prevent the cell from actively growing and preparing for division. Cells arrested in the GO phase are considered quiescent. वो खलिए जो शाज़ व नादिर ही तकसीम होते हैं, अगर बिल्कुल नहीं तो वो अपना ज़्यादातर वक्त सेल साइकिल के किस मरहले में गुजारेंगे? जवाब: जब सेल जल्द ही किसी भी वक्त तकसीम होने की तैयारी नहीं कर रहा है तो ये अपना वक्त जीओ मरहले में गुजारेगा। ये मरहला असल सेल साइकिल से अलग है और सेल को फ़आल तौर पर बढ़ने और तकसीम के लिए तैयारी करने से रोक सकता है। जीओ मरहले में गिरफ्तार होने वाले खलियों को खामोश समझा जाता है। Which structure of animal cell forms the asters of spindle? Answer. Centrosome is that structure of animal cell which forms the asters of spindle. जानवरों के खलिए की कौन सी साख्त स्पिंडल के एस्टर्स बनाती है? जवाब: सेंट्रोसोम जानवरों के खलिए का वो ढांचा है जो स्पिंडल के एस्टर्स बनाता है। What is interkinesis? Answer. Interkinesis is the stage between two meiotic divisions. इंटरकिनेसिस क्या है? जवाब: इंटरकिनेसिस दो मायोटिक डिवीजनों के दरमियान मरहला है।